Hello guys, Ali here. Uh, Let me introduce myself. Ali Rosa here, and just to give you some background of myself, I have done electrical engineering, and my technical background is somewhat related to engineering domain. And currently, I'm working in project management in one of the leading data management and consulting company in Pakistan. So today we are going to learn about Linux, why Linux, what is the purpose of Linux, why should we learn Linux, and what are the future aspects of the Linux. तो बेसिकली पर्पस क्या है लिनक्स सीखने का, हम लोग क्यों लिनक्स को प्रेफर करते हैं बनस्बत दूसरी लैंग्वेजेस के, और आपको क्यों सीखनी चाहिए. Well, let me just introduce something about Linux. One of the most basic operating system that is being used everywhere around in the technical domain of the IT companies or IT domain. Like just to give you some example, like cloud computing, DevOps, system administration, networking, uh, Linux is being used. लिनक्स का कुछ पर्पस इस तरह होता है, ये जो है इसकी इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाती है सिस्टम के साथ. तो दूसरा इसकी एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी, और जो है ये एक किस्म के एनवायरनमेंट के साथ इजीली अटैच हो जाती है. अच्छा, तो हम चलते हैं अब आगे. क्या, देखिए बेसिकली मैं आपको हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल है. मैं जो चीज़ इसको कवर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं एक किस्म का आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ. Divert in a sense, I'm diverting you from other languages, and I'm enforcing you to learn these languages. So let's just come to our first point. Why learning Linux is important for everyone? High stability. अच्छा, why high stability? देखिए बेसिकली आप पास हमारे पास जो है मेनली दो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट और एक मैकिन्टोश. और तीसरा जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो है लिनक्स. बेसलाइन ये लिनक्स है इसके पास. इसके बाद हमारे पास जो है मल्टीपल और ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जैसे फिडोरा हो गया, सेंटोस हो गया, काली लिनक्स होगी. तो ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका मुख्तलिफ यूज़ है. Well, there are different operating systems currently available in the market. The one we are using right now is Windows, Macintosh, and the Linux. And further, if we subdivide about the Linux, we can have CentOS, Fedora, Kali Linux, and many more. These are all distros which have a different usage as per their requirement. So, what is the high stability? Like as mentioned in the slide, Linux platform is renowned for its stability, user encounter fewer crashes. Processing speed remained consistent from installation to years of usage, unlike Windows where processing speed deteriorated over the time. Okay, now this is an important point. Like if you are working, if you are setting up your cluster or on multiple nodes for data processing, for data storage on databases or whatever, you can see that you are working of big data Hadoop. So at the baseline, Linux is the most easy or to use, or with the high stability, it can be easily accessible. On the other hand, like if I can say that yeah, you have 100 TB of data or 1000 TB terabytes of data on that multiple cluster, it's very difficult for the Windows to operate to maintain such data at a lower level or base level. On the other hand, if you are using a Linux, it's comparatively easy to use at the baseline on the over the server. You don't have to need reinstall it or update it again and again. On the other hand, if we are using a Windows, it's just getting update after every 1 month, which is quite hectic for our production system or what else. Uptime and reliability. Linux server boasts high time up compared to Windows server. अच्छा, let me just rephrase it in simple word. It's a time to turn up or turn on the system. अच्छा, बेसिकली ये होता क्या है, आपने सिस्टम को ऑन किया. सिस्टम के पावर ऑन करने से विंडो एक आपकी स्क्रीन के आने तक या फर्स्ट कमांड के आने तक का जो टाइम होता है वो आपका अप टाइम है. तो आपका जो अप टाइम है ना, वो लिनक्स के लिए इंतहाई कम है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ़ायदा है.
Basically, the uptime is the time that required from up, turn on the system to getting the first screen where you can operate. So this time span is really small for Linux system, while on the other hand, if you are using a Macintosh or Windows, that takes some quite time. Quite a time. You can even check your time by going to the task manager and from the BIOS, which will show you like 4, 5, 6 seconds. So that is the time of uptime your system is taking on. Okay. The majority of the internet server on the Linux platform, so all of the internet server or all of the servers are working on the Linux. Ease of maintenance. Like you don't have to update your software regularly or with an interval, and like any other application software, or even you don't have to update your Linux machine, Linux operating system after every 2 to 3 months, because updating the shouldn't will not cost you a lot. But on the other hand, if you are using a Windows or any other operating system, you will have to update it on a regular basis. तो मसला ये होता है कि हमारे पास जो है अगर हम लोग कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपको उसको मुसलसल अपडेट करना पड़ता है। आप अपडेट नहीं करते तो आपकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। लेकिन आपको लिनक्स में ये इश्यू नहीं आता। तो लिनक्स इस लिहाज से भी आपको काफ़ी ईज़ी टू यूज़ होता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको इसमें कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। आपको जस्ट एक ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना होता है। इसके कुछ पेड वर्जन भी है, देयर आर सम फ्यू पेड वर्जन ऑफ द लिनक्स। आई थिंक रेड हैट इज प्रोवाइडिंग इट विद द पेड सपोर्ट while but I can I'm telling you about this. Linux has such a biggest one of the biggest community all around the world, and it's available all online. So if you are facing an issue, a community is available to support you. It can run on every hardware. Now, what I'm telling you is about every hardware. If I'm being an electrical engineer and use it on a Raspberry Pi. So just give you a short intro about Raspberry Pi. It's an electrical device used to control and automate some of the electrical systems. So I can use Linux there too. And on the other hand, I cannot use a Windows. Linux can be used with the and can be integrated with the electrical devices, and it requires optimum or most minimal usage. It's efficient resource utilization. You can use even with a 4 GB RAM of the operating system. You can use or 2 GB RAM operating system. You can use Linux operating system. But okay, now the last point: career opportunities. System administrator. One of the most system administrator and DevOps. These two are the most high demanding jobs are where your skills are required, and you must acquire Linux command to excel in this field. System administrator is responsible for setting up, configuring, and maintaining server, network, and IT infrastructure. And Linux administrator are manage the user account security and managing the and maintaining the configuration and maintaining the servers. And DevOps engineer are they use the Linux tool to automate deployment, manage infrastructure as a code, and ensure the continuous revision and continuous deployment. So both of the careers are required Linux, and not only this, there are a lot of other career opportunities like other than these four. So the main purpose is to use the Linux. देखो, आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, किसी भी इंडस्ट्री में, अब अगर मैं आपको ये बात कहूँ, यहाँ पे सिर्फ गिनती की इंडस्ट्रीज है या गिनती की डोमेन है जहाँ पे लिनक्स यूज नहीं हो रही। लाइक आपकी वेब डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे लिनक्स नहीं यूज हो रही। अब माइट भी थोड़ी बहुत यूज हो रही हो। आपके पास कोई और जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आई थिंक सो, वहाँ पे भी लिनक्स यूज होना शुरू हो गया। अब आपके आईटी डोमेन में हर जगह लिनक्स यूज हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एफिलिएट मार्केटिंग आ गई, वेब डिज़ाइनिंग आ गई, वहाँ पे लिनक्स नहीं यूज़ होती। लेकिन अब 95% आपकी लिनक्स यूज़ हो रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लिनक्स को यूज़ करें, उसको सीखें और चेक करें। थैंक यू। मैं कुछ कोशिश करूँगा मैं इसकी छोटी-छोटी और भी वीडियोज़ अपलोड करूँ। आप इस पे रिसर्च करें और जो क्यूरीज है